Okay students, we are doing chapter number 7, which is coordinate geometry. Today we will solve question number 5 from the exercise 7.1, which is show the points A 0 and 2, B square root 3 and 1, and C is 0 and minus 2 are vertices of right triangle. Okay students, do you know about what is right triangle? Okay student, do you know what is right triangle? A triangle which have an angle of 90 degree is called right triangle. Okay, first of all, we draw right triangle which have vertices A, B and C. A point 0 and 2 and point B is 3 square root 1, point C is 0 and minus 2. Okay students, when we solve the right triangle, we use Pythagoras theorem, which is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Here is hypotenuse is AC, distance of AC, base is AB, perpendicular BC. We will find the distance of AC. As you know that distance of AC is equal to x2 minus x1. AC means that we will use A point A and C. From C point, x2 is minus 0, and from A point x1 is also 0. Whole square plus minus 2 minus 2. Okay student, after using this distance formula, AC is equal to 0 minus 0 is also 0. Minus 2 and minus 2 is minus 4 whole square. Distance of AC is equal to 0 square is also 0 plus minus 4 square is 16 square root. AC is equal to 16 square root AC 4 square is equal to 16. That's why square root of 16 is equal to 4. Means that distance of AC will be 4. Now we will find distance of AB. Distance of AB. For finding distance of AB, we will use the point A and B. In point B, we have x2 is 3 square root minus and x1 is 0 whole square plus in point B y2 is 1 and y1 is 2 whole square. Square root minus 3 is also square root 3 whole square plus 1 minus 2 is minus 1 whole square. AB, distance of AB is equal to square root of whole square will be 3 plus minus 1 square is 1. AB, distance of AB 3 plus 4 square root. Okay students, now we will find the distance of BC by using distance formula for point A, B and C. From point C, x2 is
x1 is square root 3 whole square plus from C y2 is -2 and y1 is 1. Zero minus 3 square root is also 3 square root plus -3 whole square. After taking square, it will be 3 plus 9 BC distance of BC is equal to 12 square root. Okay student, now we will put in the Pythagoras theorem all these values. Now put these values in Pythagoras theorem. The distance of AC is 4 and the distance of AB is square root 4 and the distance of BC is square root 12. 4 times 16 and square root. After taking square of 4, square root is 4 and after taking square of square root 12 is 12. Now after solving, we see that left hand side is equal to right hand side. Student, so prove the required, which is it is a right angle triangle. So prove the required. Okay students, आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने क्या करवाना था, एक राइट एंगल शो करवानी थी जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे A, B and C. As you know that a right angle triangle is which have an angle of 90 degree. A, B and C are the three vertices of right angle triangle. यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट दिया हुआ था 0 and 2, B हमारे पास था 3 square root and 1 and C हमारे पास था 0 and -2. इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया. वेयर इज हाइपोटेन्यूज इज AC and base is AB and perpendicular is BC. After using Pythagoras theorem, we will solve the value of for the finding of value of AC, AB and BC. यहाँ पे हमने AC का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया. यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो आप पहले पढ़ चुके हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. यहाँ पे इनकी मैंने वैल्यूज इंसर्ट की. आफ्टर इंसर्टिंग these values we will solve it. 0 - 0 is also 0, 0 square plus -2 and -2 is -4, -4 square. After taking the square of -4, it will be 16. 16 plus 0 is also 16. The square of 4 is 16. After taking square, it will be 4. अब ऐसे हम लोगों ने क्या करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड करना है. AB का जब हम डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है. ऐसे ही हमने x2 और y2 और x1 और y1 की वैल्यूज इंसर्ट करनी है. वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट. यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 एंड -1 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा. 3 + 1 इज आल्सो 4. यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर बना के यहाँ से 4 को जो है वो 2 का स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट कैंसिल भी कर सकते हो. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रहने दें क्योंकि हमने यहाँ पे नेक्स्ट इसको स्क्वायर से पहले ख़त्म कर लेना है.
अब यहाँ पे हमने बी सी का डिस्टेंस लेना है। जब हम बी सी का डिस्टेंस लेंगे तो वही हमने बी और सी दोनों पॉइंट यूज़ करने हैं, वही सेम जैसे हमने पीछे किया था ए सी और ए बी के लिए। हमने यहाँ पे x1 और y1 और इसके बाद x2 एंड y2 की वैल्यूज यूज़ करके यहाँ पे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पे 9 + 3 रह गया। 9 + 3 हमारे पास 12 हो गया। यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर लेके यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ही लगा के वहाँ पे चूँकि हमारे पास स्क्वायर है तो हम लोग वहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको पाइथागोरस थ्योरम में इंसर्ट किया। हमारे पास यहाँ पे ए सी था, इधर हमारे पास ए बी था और यहाँ पे हमारे पास बी सी था। इधर हमारे पास ए सी की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट आई थी, जो हमारे पास हमने इसका 16 स्क्वायर रूट आए थे, जो हमने 4 का स्क्वायर बना के इसको यहाँ से रिमूव करके स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे 4 लिखा था। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके 4 आ गया। यहाँ पे भी ऐसे सेम कंडीशन 12 आ गया। 16 यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया 16, 4 + 12 = 16। यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ चुके हैं। मीन्स दैट हमारे पास जो रिक्वायर्ड था कि हमारे पास ये जो पॉइंट लिए गए हैं ये एक राइट एंगल जो है ट्रायंगल बनाते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ चुकी हैं। होप ये स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 2 और 3 है वो आप लोगों ने करना है। ओके, वी मान